ओके लेंसेज वी हैव टू स्टार्ट, बट इजी है लेंसेज का, ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज 10th क्लास में आपको ऑलरेडी मालूम है वी हैव टू गो फॉर लेंस मेकर फॉर्मूला, देन वी हैव टू गो फॉर द न्यूमेरिकल्स विल फोकस मोर. सो लेंसेज में ऑलरेडी यू नो, सो लेंस का क्या है, इट इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस. Minimum two surfaces are required that should be transparent and one should be spherical compulsory. That's why they're called spherical lens. Okay. And we have how many types of lens are there? How many types of lens are there? Two types, right? Basically, what are the two types? Convex lens and concave lens, right? Basic types. Okay. So convex lens. All we can call converging lens. Convex lens ka will look like this one. These are convex lens normally. Okay. Converging lens. मतलब इसका हाउ टू आइडेंटिफाई दिस कॉन्वेक्स लेंस बोल के, मिडिल में मोटा रहेगा, ऊपर पतला रहेगा, राइट. सो व्हेन लेंस इज थिकर इन द मिडिल देन एट द एजेस, इट इज नोन एज कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस. सी काइनेमेटिक्स वगैरह स्टार्टिंग में, लास्ट में थोड़ा बिफोर स्टार्टिंग द पेपर्स आई विल रिवाइज, थोड़ा ओवरऑल व्यू देखेंगे. अभी रिएप्टिक्स होने समय काइनेमेटिक्स किया था, व्हाट इज यूज, सिंपल चैप्टर काइनेमेटिक्स कुछ नहीं है इसमें. शॉर्ट फॉर्म में फास्ट फास्ट लिखो, पूरा मत लिखो. ओके ओके. एंड कॉन्वेक्स लेंस भी आपको सम डिवीजन हुआ, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स देखेंगे. देयर आर थ्री टाइप्स. वन इज नॉर्मली वी कैन कॉल्ड एज बाई कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज नॉर्मल लेंस. एंड दूसरा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस. ओके देखो, बेसिकली इसको कॉन्वेक्स लेंस क्यों बोला, मिडिल में तिक्कर देन एडजस्ट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस, दैट्स व्हाई नाम कॉन्वेक्स लेंस आया. And one surface is plane, that's why plano convex. Okay. और इधर देखो बीच में thicker है, then adjust, right? That's why convex lens. And since it is a concave, गुफा है ना, so concave or convex. So based on the nature, we should say, first of all, which lens, and plano na concave we can know. Done? Yes. चलो same thing. Now concave lens, concave lens नंतर में diverging lens, right? So concave lens में shape तो ऐसा रहेगा. This is a concave lens. Concave lens is also called as biconcave lens, right? Biconvex, concave, that is biconvex. Okay. So here क्या होगा, बीच में thinner है, ऊपर bulging है, right? So देखो, when the lens is thicker at the edges than middle, it is known as concave lens. And ठीक है देखो, here also we have three types, right? ऊपर में thicker है, then edges, then middle. क्या सर्च कर रहे हैं सात्विक? What you want? Okay, चलो. Now here also we have three types. One is biconcave lens, plano concave lens, and convexo concave lens. So बीच में thinner है, then edges में ज्यादा मोटा है,
That's why it's called concave lens. Since one surface is plane, plano concave. And same way, बीच में पतला है, then edges. That's why concave lens. And since it is shape of convex, that's why convexo concave lens. Okay, done. Chalo. Now terminologies. Already you know what are the terminologies we have. Center of curvature, radius of curvature, optical center, focal point, and focal length. So this is a convex lens. Tell me now. This line is called as principal axis. This is optical center. I call this as F1 focus. Here 2F1 is the center of curvature of the this lens. Here 2 radius of curvature will be there, 2 focus will be there. Okay. By देखो इसका sphere is formed this side, right side, and इस surface का sphere is formed on the left side. इसका भी center रहेगा, इसका भी focus रहेगा. So इधर also F2, 2F2. 2F2, 2F1 is nothing but center of curvatures. These are the terminologies. Optical center, center curvature, radius, you know, from optical center to the center is nothing but the radius. So 2 radius will be there. Okay. The terminology is already learned, right? 10th class याद है ना सात्विक? इस तरफ वाला always F1 to F1, उस तरफ F2 to F2. शॉर्ट फॉर्म में लिखो, नो नीड ऑफ डेफिनेशंस वगैरह. देन विल सी थोड़ा रूल्स लेके रे डायग्राम्स आपको लर्न करना पड़ेगा, व्हिच आई एम रिमूविंग रे डायग्राम्स का. बेटा सब चलो. तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस में आपको रूल्स आई विल टेल यू, रे डायग्राम्स आपको लर्न करेंगे. ओके. रूल्स मालूम है ना? बोथ रूल्स विल सी. देखो कॉन्वेक्स लेंस का पैरेलल फोकस, पैरेलल फोकस, दैट्स व्हाई एक कन्वर्ज हो रहा है ना, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं. हियर क्या होगा कॉन्केव में? पैरेलल, डाइवर्ज एंड अपीयर टू पास थ्रू फोकस. पैरेलल, डाइवर्ज, अपीयर टू पास थ्रू फोकस. सिंस इज डाइवर्जिंग, दैट्स व्हाई डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं. फर्स्ट रूल ऑलवेज we'll use these rules only in ray diagrams में. ओके. हाँ, सेकंड रूल इसका रिवर्स है, इसका रिवर्स है सेकंड रूल. फोकस पैरेलल. सी पहले वाला क्या है? पैरेलल फोकस. ये वाला फोकस पैरेलल. ए बी appear to pass through focus but after refraction goes parallel to principal axis. I'm inserting like this, appear to pass through focus. Here also appear to pass through focus but it will go parallel to principal axis. Only 3 rules are there, that's it. Done ना? Yes. Now third rule, ऑप्टिकल सेंटर से पास किया तो इट विल नॉट रिफ्लेक्ट, विल गो स्ट्रेट ऑन. ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा सीधे चले जाएगा. दोनों सेम रूल होंगे.
डन। नाउ लेंस मेकर फॉर्मूला, रे डायग्राम्स आपको लर्न कर रहे हैं, रे डायग्राम्स आई एम नॉट टॉकिंग, रे डायग्राम्स में क्या है, व्हेन यू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टुवर्ड्स द लेंस, द इमेज विल रन दैट साइड। ओके, एक ही एक स्पेशल केस है इन कॉन्वेक्स में, इट फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, रिमेनिंग पूरा रियल इन्वर्टेड इमेज। बट कॉनकेव में वी हैव ओनली टू डायग्राम्स ओनली, ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट ही आएगा। सो ऐसा कौन सा मिरर है, बोथ इमेजेस, ऐसा कौन सा लेंस है, बोथ इमेजेस आर फ्रॉम रियल एंड इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्ट कॉन्वेक्स लेंस, राइट। चलो, नाउ लेंस मेकर फार्मूला, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इधर से ओनली थिन लेंस फार्मूला विल बी कमिंग, दैट फार्मूला आल्सो विल बी यूजफुल फॉर यू। ओके, so lens maker formula, already you know that is a formula. What is the purpose of this lens? See, formula क्या है, 1 by f is equal to mu l by mu m minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2। देखो, इसका लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू एल, मान लो इसका मीडियम का म्यू एम एंड इधर भी मीडियम म्यू एम, एंड फर्स्ट सरफेस को ऑलवेज वी शुड टेक एज r1, सेकंड सरफेस का रेडियस इज r2। ओके, then incident ray is this direction, right, this direction incident ray. Then by using lens, thin lens, see, by using lens maker formula, we get this formula, 1 by f is equal to mu l by mu m minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2। उसका application देखो, where we use this lens maker formula to our desired radius of curvature, we can design our lens। See, suppose you will go for a spectacle shop फर्स्ट पर साइड चेकिंग के लिए, ही विल चेक एंड ही विल राइट पावर, राइट, मिशन के इतना पावर है बोल के, आपको लेफ्ट है राइट है बोल के, इतना पावर है बोल के देगा वो, देन एंड देयर इज ही इज गिविंग द स्पेक्टिकल्स, नो राइट, ही विल टेल आफ्टर 2 days के बाद आ जाओ, व्हाई 2 days की रिक्वायर्ड, वो लोग ये लोग क्या करेंगे, इस डेटा को दे विल सी द फ्रेम आल्सो, दे विल सी द फ्रेम आल्सो व्हिच यू चूजन, दोनों अटैच करके दे विल सेंड टू द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। वो क्या करेगा, they are still now they are using this formula only, if you go in manufacturing plant, how you will get r1 r2 means they will use this formula only। Okay, so they are using this formula to design the required power। See, 1 by f is nothing but power, right, आपको पहले से पावर मालूम है, so focal length you can calculate from that। so desired आने के लिए r1 r2 को चूज करना पड़ेगा, सो द कंप्यूटर में डालेगा पैरामीटर्स, वो R1 R2 इतना दे दो बोल के बोलेगा करस्पॉन्डिंग में। सो वो अंदर दे विल नॉट कट मैन्युअली, एक्चुअली कंप्यूटराइज्ड ओनली। ओके, सो लगा के वो सेट पैरामीटर्स करके छोड़ दिया तो रोबो कटिंग करेंगे, रोबो ने पूरा पानी डाल के पूरा इतना लेंस को कट करेगा, वो नीट आने के बाद साफ करेगा, पैक करेगा, बॉक्स में डाल लगेगा, उसका नाम दे देगा आपको। ओके, सो दिस अभी तक जो यूज करने वाला फॉर्मूला, दिस वन लेंस मेकर फॉर्मूला अभी भी यूज कर रहे हैं। ओके, सो 1 by f is equal to mu l by mu m minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2 is a formula we have to use, and इधर से only we get a, we call as thin lens formula बोलते हैं इसको, we call as thin lens formula which we already know, 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u, ये माइनस है, minus 1 by u, 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u is a thin lens formula we are using। ओके, सो लेंस फॉर्मूला कब यूज करेंगे, whenever radiuses are given to you, r1 r2 is given to you, refractive index of the lens and mediums are given, focal length find करो बोल तो you can use this formula, lens maker formula, focal length that आ जाएगा। okay, and thin lens formula, when object distance will be given, focal length will be given, image distance find करो बोल तो ये वाला यूज करेगा, 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u, and what is u and what is v, u is nothing but object distance and v is nothing but image distance, image distance, and very important, we have to use all these with sign conventions, r1 r2 f sign convention use करने का always, and here this u v f always sign convention, sign convention। okay, sign convention याद है ना, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन में पॉजिटिव, and object you will measure always from optical center से, if you are measuring backwards you take as negative, incident ray का direction is positive always। okay, so formula बैठ करो, लेंस मेकर formula very important।
आपको टेक्स्ट बुक्स में मटेरियल में कैसे रहेगा, लेंस मैकर फॉर्मूला लाइक दिस रहेगा, एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन टाइम्स ऑफ वन बाय आर वन माइनस वन बाय, ऐसा बोल के लगेगा। बट ये क्या है, ही इज थिंकिंग द मीडियम इज एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन है, ए वन है, ये म्यू का डाल दिया। बट उससे अच्छा ये लर्न करो, आ जाएगा म्यू एल बाई म्यू एम माइनस वन इंटू वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू, आई ऑलरेडी पुट इन द फॉर्मूला शीट। ओके, चलो श्रीराम आ गया, बोलो फॉर्मूला। mu L by 1 by F is equals to mu L by mu M minus 1 into Into? R1 minus R2. नो क्या है यार, अब पढ़ो। 1 by R1 minus 1 by R2. बोलो शिवंगी बोलो, वन बाय एफ इज इक्वल टू mu L by mu M minus 1 into 1 by R1 minus 1 by R2. ओके, सादिक बोलो, वन बाय एफ इज इक्वल टू F is equal to mu L by mu M minus 1 into 1 by R1 minus 1 by R2. we have to use with sign convention। देखो फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर you should take as positive नहीं टोटल में, you form a sphere is forming on the right side, मतलब इधर से you are measuring right, so this direction में same nature है ना, that's why it is you should take as R1 positive in this case में। so आपको first surface R1 second surface R2, देखो R second surface देखो R2 is forming the left side distance from here to here right, isoform which is opposite direction to that of incident ray, that's why it is taken as negative, so you should be careful based on the lens you have to see। okay, चलो न्यूमेरिक्स करेंगे, करो। so they given a biconcave lens made up of glass of refractive index is given, मतलब refractive index of the lens is given as 1.5 and radius of curvature they given as 30 centimeters and biconcave right, दोनों radius of 30 biconcave right, so दोनों radius इधर 30 same दिया। find the focal length of the lens in air, मतलब medium is air, यूज करो, find the focal length, I'll give options, दो options I'll give। no problem, tell। I'm getting 30. कितना कितना 15? No, wait, it's A. infinity, okay, सात्विक Minus 30. हाँ -30, मैं ऑप्शन नहीं लिखा तो ये उसमें चूज करेगा, जो भी लिखा वो उसमें थोड़ी ना चूज करने का। देखो मतलब कौन सा अच्छा लगा बोल के लग डालने का, ऐसा नहीं, साइन कन्वेंशन चूज करना पड़ेगा। R1 यू शुड टेक एज नेगेटिव, R2 यू शुड टेक एज पॉजिटिव, ओके, सो दैट्स वाई जीरो नहीं आएगा इसमें। ओके, सो वन बाय समझ में हम 1 by f is equal to mu L minus 1. So 1.5 minus 1 into 1 by R1. R1 is minus 30 minus 1 by R2. 30. देखो जीरो नहीं हो रहा है सॉल्व करने का। ओके चलो, सीएम आ गया -30 बोल के, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट। So the radius of curvature of the faces of a double convex lens, different radius are given to you. Focal length also given to you. The refractive index of the glass is how much? Refractive index of the glass. So mu is asking. So when they're not mentioned, outside is air only. बाजू में if you draw convex lens so that you can know sign conventions के लिए. The first surface R1 is taken as positive, R2 is negative. And since it's convex lens, focal length is positive.
Is it 3 by 2? 3 by 2 is 1.5. Yes, correct. 1.5. Yeah. Yeah. R1 take positive subject. R1 take positive and R2 you take negative. Got it? Same getting a, or you want a 1 by F is equal to, Got it. got it? Refractive index also we have to find, right? So that's it, simple. ना करो. And plane mirror का focal length will be? Plane mirror का focal length will be? Infinite. Yeah, infinite. करो. Refractive index of the lens is given. Focal length is we have to find. And radius of curvature of the lens is given. And this mirror को क्या बोलते हैं बोलो? इस लेंस को क्या बोलते हैं? हाँ, yeah, planar convex. हाँ. So 40. अरे करके बोलो, समथिंग समथिंग किधर से ले करेगा, सर्च करेगा यार, चैट वीडियो ओपन करके कुछ कर रहे हो. 740. ओके. 1 by infinity is 0, right? यूज करो. आया? यस. चलो. Thin lens with center of curvature C1, C2 is given. Refractive index is given. What is the focal length is asking. इसका नाम बोलो सात्विक. इस मिरर का क्या नाम दो? Concave convex. चलो. So 40. यू डोंट टेल, समझे? यू आर समवेयर कॉपिंग करो, पूरा करके दिखो, मुझे दिखो नोटबुक में करो. कुछ दिखता ही नहीं है, करो. समथिंग. R1 you take as positive, R2 is also positive, right? Substitute करो. Refractive index is also given. Sriram you tell. कितना है सात्विक आंसर? 40. ओके, देखेंगे. 1 by F is equal to mu L minus 1 into 1 by R1 minus 1 by R2. So 40 only. 40 will be answer. 40 है? क्या रोट है? Mu L 1.5, right? 1.5 minus 1 into 1 by 10 minus 1 by 20. So कितना होगा? Sir, R1 will be the bigger one, right? फर्स्ट सरफेस का ऐसा रहेगा. सेकंड सरफेस नजदीक दूर रहेगा ना. Oh, right. सो Right. सो 40. नेक्स्ट आंसर बोल देगा सात्विक डायरेक्टली. चलो करो, आराम से करो. सो कॉन्वेक्स और कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस is made up of glass refractive index this much. Focal length is given. Radius of curvature of one surface is double the other. The given radius of one surface is double the other. So radius of curvature of the two surfaces are. मतलब R1 R2 is asking.
Is it 6 and 12? Oh, okay, good. 6 and 12. Yes. Good. So R1 you can take as C. ये दोनों ऐसे है ना? So R1 is minus R. R2 will be minus 2R. दोनों इस तरफ है ना? Direction. Minus 2R. And refractive index they given as the given refractive index radius of curvature of the two lenses. Glass का refractive 1.5 is given. हाँ खत्म. And focal length कितना लेगा? Focal length positive negative हुआ? सादिक बोलो. So, focal length should be positive negative हुआ? It's a negative. Why negative? So it's opposite direction of the. Opposite direction नहीं है. ऐसा opposite direction नहीं है. He told, देखो this is a convex or concave, right? That combination behaving like diverging lens. Diverging lens is nothing but focal length negative है. So that combination he only given that it is behaving like a diverging lens. That's why negative. अगर converging lens हो तो इस तरफ वाला नहीं चलेगा. Positive होगा. Okay? Very important. आया? Everything is given, Sriram. Mu value is given 1 by f is equal to 1.5 minus 1 into 1 by r1 is minus r minus 1 by r2. So minus of minus plus 1 by 2r. So 1 by f value also given 1 by 24 centimeters. So if you solve, then you'll get r value. And 1 is double, right? So 6 will get, this will be 12. Okay? चलो. Now देखो इसमें अभी तक air था ना? Now I immersed in liquid of refractive index 2. In this case में mu minus 1 वाला fail हो जाएगा ना? Find the focal length and nature of same lens. I want nature also. So क्या है? Convex lens of focal length in air. First case में क्या है? आपको convex lens है air में. इसका refractive index of the lens they given as 1.5 and focal length they given as 20. Plus 21, right? Convex का. Okay. Calculate the focal length in same lens when it's immersed in liquid. Now same lens है, मैं liquid में डाला. इसका refractive index is mu is equal to mu m is equal to 2 and lens का mu l का 1.5, right? Now it's telling to find the focal length of this new thing. FL चाहिए. In liquid में focal length कितना होगा? We want. Minus 40. Minus 40 देखेंगे. So one small doubt. Tell me. It's gonna be liquid. Or is it air and liquid? So like on both sides, is it air or is it just This is like air है. First case में. Second case same lens I put in liquid. Okay. उसका refractive index is 2. So at that time में he's asking what is the new focal length. कितना है? साधु कितना है? 740. 40? Wrong. So wrong. F is 40 wrong. So equation फॉर्म करो इधर से 1 by f in air मान लो f in air. Okay. So mu minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2, right? First equation. लास्ट में सब्सक्राइब तो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड किया तो नो प्रॉब्लम. r1 r2 को फोकस मत करो. इसका कितना होगा? 1 by f in liquid is equal to mu l by mu m. Mu l by mu m. So 1.5 by 2 minus 1 times 1 by r1 minus 1 by r2. So when you divide this by this, आपको 1 by r1 minus 1 by r2 कैंसिल हो जाएगा. नो सॉल्व करो. एंड फोकल लेंथ इधर तो मालूम है ना, FL फाइंड करो. तो
तो सॉल्व करो, कितना है सात्विक? नो आंसर। करो, सॉल्व करो। डिवाइड करो दिस बाय दिस, so 1 by FA by 1 by liquid is equal to 1.5 minus 0.5 by 1.5, so minus 0.5 by 2। तो सॉल्व करो सबसे, कितना? FL by 40 only, रॉन्ग, -40 आएगा, माइनस किधर जाएगा? ये माइनस से जाना, एफ इन लिक्विड इज इक्वल टू -40। इधर वेरी इंपॉर्टेंट है, माइनस क्यों आ रहा है? सी एक्चुअली कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ शुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव? पॉजिटिव है, राइट? बट लिक्विड में डालने से उसका नेचर ऑफ लेंस इज चेंजिंग, इट इज बिहेविंग लाइक ए कॉन्केव लेंस। दैट मीन्स व्हेन वी हैव टू यूज दैट वन, देखो इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, refractive index of the liquid is greater than lens, then the nature changes. That's why I put in formula sheet में, formula sheet प्रिंट आउट लिया सब्जेक्ट? हाँ देखो, उसमें नीचे देखो, वो पॉइंट्स लिख लो। if the lens is immersed in liquid, वो पॉइंट्स लिख लो, फर्स्ट वन। केस 1 केस 2 में लिख लो उधर, म्यू एल इज, म्यू ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ लेंस। क्या होगा? कन्वर्जेंट lens will behave like divergent lens, and divergent will behave like convergent, okay, vice versa। अगर mu of liquid is less than mu of lens अगर होगा तो इसका फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, फोकल लेंथ, सॉरी, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, फोकल लेंथ इंक्रीजेस। पहले कितना था वो, फोकल लेंथ इंक्रीजेस। नाउ टेल मी, इफ म्यू लिक्विड इज इक्वल टू लेंस क्या होगा? देखा बेटा? हाँ, केस 3 बोलो, देखा बेटा? कन्वर्जेंट बिहेव लाइक डाइवर्जेंट लेंस, डाइवर्जेंट बिहेव लाइक कन्वर्जेंट लेंस। अगर दोनों इक्वल हो तो नथिंग। नथिंग, कुछ तो होगा ना एक्चुअली। लिखो, कॉपी वाला, हाँ। सो केस 3 लिखो, इफ म्यू ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस, देन इसका फोकल लेंथ विल बिहेव लाइक इन्फिनिटी, फोकल लेंथ विल बी इन्फिनिटी हो जाएगा, एंड लेंस एक्ट्स लाइक ए ग्लास स्लैब, लेंस एक्ट्स लाइक ए ग्लास स्लैब। ओके, सो बिट्स में ये पूछने के चांसेस ज्यादा है। चलो, एक करो। A thin lens of refractive index of 1.5 has focal length this much in air. If the lens is placed in medium of refractive index 4/3, what will be the new focal length? So here you can eliminate some options, right? Tell me which one you can eliminate. Here mu of medium liquid is 4/3. 4/3 is how much? 1 point something, right? मतलब क्या हो रहा है? हाँ ठीक है, ट्राई करो। हाँ
60 centimeters. 1 minute, 15 centimeters. When the length of the pet in medium, given refractive index of water, they given as 4/3, and refractive index of glass lens का लिख लो, lens का is 3/2, which is glass का. So lens का, if you solve in decimal, 1.5, right? And it's 4/3 को it is 1.33. So आप कर सकते हैं. So लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का लेस देन लेंस, राइट? सो कौन सा एलिमिनेट करेंगे फर्स्ट? So focal length, what will happen if mu of liquid is less than mu of lens? Focal length क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, राइट? इंक्रीज हो गया तो 15 से ज्यादा रहने का, राइट? मतलब ये दोनों नहीं है ना? हाँ, नो सॉल्व कर दिया. हाँ, साथ करो, बोलो, समथिंग बोलेगा ना. It was 60. 60, यस करेक्ट. 60 है ना? अब उसको करने नहीं दे रहे श्रीराम को. करो श्रीराम, वो लोग ऐसे बोलेगा. दो केस लेने का, मतलब एयर वाला एक केस लेने का, एक लेंस का लेने का. सो इधर भी फॉर्मूला यूज करना है, 1/f इन एयर इज इक्वल टू म्यू एल माइनस, मतलब म्यू एल माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. एंड इधर क्या आएगा? मीडियम में है ना, पानी में डालेगा ना. सो 1/f ऑन लिक्विड इज इक्वल टू म्यू एल बाई म्यू एम minus 1 times of 1/r1 minus 1/r2. So if you divide, we will get the same thing. We get the answer as 60 centimeters. Because ये दोनों cancel हो जाएगा and solve करना है. Okay. So here focal length is increasing बोल के meaning समझ में आने का, right? चलो. Now shortcut of thin lens formula. Thin lens का questions करने वाला है. Thin lens का. So thin lens का formula क्या था? 1/f is equal to 1/v minus 1/u, right? So इसको मैं bring one side and find v from this. 1/v is equal to 1/f plus 1/u. So 1/v is equal to u plus f by uf. So इसको reciprocal करो. So v is equal to uf by u plus f. This is a shortcut formula. Mirror में क्या था? uf by u minus f आता था. This is uf by u plus f. And magnification formula, v by u is equal to hi by ho is a formula. Because already you got minus here, no minus will be there. Now v के जगह में सब्स्ट करो, uf by u plus f by u. Cancel. Magnification is f by u plus f. ये भी फॉर्मूलेट में डाल दिया. सो f by u plus f, ये शॉर्टकट किस लिए यूज होगा? v फाइंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली f by u plus f. And we have to use with sign conventions. u मालूम है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v is the image distance. केवल 10 क्लास क्वेश्चंस का ये वाला पूरा. ओके, अब सम क्वेश्चंस करेंगे, then we'll go for new topic. Copied? तो फॉर्मूला शीट में 12th फॉर्मूला वी लर्न कंप्लीटली नो. चलो मैं करो. Find the position, nature and size of the image formed by the convex lens of focal length is given when 2 centimeters long object is kept in front of it. मतलब height of the object is given to you. And object distance is first case में -15, second case में -5. and solve करो. So convex lens है ना आपका. So u is how much? This is incident ray. u तो ऐसा मेजर करेगा ना, कितना? 15 centimeters. So -15 centimeters. And focal length, since is convex lens, positive है, +10. And find v by using the formula uf by u plus f. अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आए तो रियल एंड इन्वर्टेड, पॉजिटिव आए तो वर्चुअल एरेक्ट.
size means hi we have to find. कितना? So for the first one, I got V is plus 30, Plus 30. Okay. M is minus 2, Hmm. HI as minus 4 inverted. Yeah, invert image. Second one सात्विक बोला. Second one I got plus 2. Plus 2. no. UF by U plus F. करो. So 5 centimeters वाला. So UF by U plus F. So talking about the magnification. Magnification plus 2. Okay. Next. Height of the image HI. Plus 1. No. V कितना है? V minus 10. So HI by HY is equal to 2I ना? Yes. HY is how much? 2 centimeters. So Oh, HI equal 4 centimeters. आया? चलो. करो. Find the distance of the object. मतलब U is telling to find from the convex lens. The focal length is given. So that image size is 4 times the size of the object. मतलब magnification is given to you. But since convex lens, we have 6 cases. In that में both real भी आएगा, inverted भी आएगा. So since magnification is 4 means we should take positive negative. We should take positive negative in this case में. Because he did not mention real, virtual. So आपको 2 केस लेना पड़ेगा. Okay. So m equal plus 4 एक बार करने का, m equal to minus 4 एक बार करने का, and we have to find the object distance. You find कर. Only the given focal length is only given as 10 centimeters. V is not given. So now you will find V, right? Find कर. V कैसे आएगा? अधिक V फाइंड कर रहा है अधिक. V you are finding? yes. Huh? Yes, sir. We have a formula sheet एक बार open करो. Formula sheet. पिक दिया. देखो. Yes, it's down. Okay, चलो. I magnification when the in terms of focal length and object distance. What is formula? Yes, I'm doing that from I got that. Sir. मतलब V फाइंड कर बोल रहे हैं. हाँ ठीक है. I करो, got equal and Okay, करो. We have to find U only, not V. So use the formula F by U plus F. That is advantages. V के जरूरत नहीं है. Directly use this formula. आगे साथी दोनों. हाँ करो, बोलो कितना आंसर? minus 12.5 and 7.5. Minus 7.5, right? Yeah. So F by U plus F.
m के जगह में 4 लगाओ श्रीराम, f 10 by u plus 10. If you cross multiply, you will get answer as minus 7.5. And if m is negative में, u as minus 12.5 centimeters. Okay, चलो. इमेज इज अपराइट बोला ना, एंड लेंस है, फाइंड द नेचर ऑफ लेंस एंड ऑब्जेक्ट लेंस है. ये वाला कौन सा लेंस यूज करेगा? चलिए, लेंस ऑफ फोकल लेंस फॉर्म्स एन अपराइट इमेज, वर्चुअल इमेज एंड हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. मतलब कौन सा लेंस विल यूज, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? बिकॉज diminished image we are getting, right? Diminished image छोटा है and virtual erector है always. So that means we have to use concave lens. Concave में we have only two cases. किधर भी रखो you will get always a diminished virtual erect image. Okay, so concave lens है. Based on that, focal length will be negative, right? No solve. Convex में upright image will be magnified image. Okay, since he told reduce हो गया ना, reduce हो गया, that's why it is concave. आ गया आंसर? तो क्या कर रहे हैं, बैठ कर रहे हैं क्या पूरा? बोलो. minus 10 centimeter. So चलो, ऐसा क्वेश्चन इजी राइट आपको? चलो, नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस में जाने वाला है. कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस में कैसा, मतलब इसका इमेज विल एक्ट लाइक ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस वन. 2 बार लेंस फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने वाला है. मजा आएगा ना? आया सेम चला? ओके चलो, मैं तो परेशान कर रहा है सर, क्वेश्चन देने से आंसर बोल रहा है. ओके ठीक है, ये करो. हाँ, एक एक मॉडल करे वाला करो. देखो, पेंसिल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर्स प्लेस along the axis of the convex lens of focal length 10 सेंटीमीटर्स. इसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर्स. पेंसिल का लेंथ है 10 सेंटीमीटर्स. such that the middle point of the pencil is at distance 20 centimeters. Middle point is 20 centimeters. Okay, from the lens, find the focal length of the image of the pencil. Image of the image of the pencil चाहिए. Find the focal, find the length of the image of the pencil. Length चाहिए. Yeah. सो आपको क्या करेगा? फर्स्ट देखो, आया कुछ प्रतीक? क्या करेंगे इसका? हाउ टू फाइंड image of the length of the image. So if you take the starting point at the ending point of the pencil, starting point ले लो. इसका object distance is how much? First इसका it is 15, right? So A point का ले लो, first point image. So A का U is minus 15 and focal length is 10 centimeters, and find V by using this formula. Find V, UF by U plus F. कितना है इधर V A का? plus 30. हाँ, प्लस 30 सेंटीमीटर्स. तो नेक्स्ट B पॉइंट ले लो, इस पॉइंट का. सो U इज हाउ मच? minus 25, बिकॉज मिडिल से ये वाले भी ऐड करेंगे, राइट? minus 25. F is 10 एंड B फाइंड करो, डेसिमल में आएगा. UF by U plus F. 50 by 3. हाँ, so that is how much? 1.6. 16.6. 16.66. देखो, प्लस 30 मीन्स इधर से प्लस 30 सेंटीमीटर्स में इधर A डैश था, एंड B is 16.66 मीन्स हियर रहेगा, राइट?
नाउ ये डिस्टेंस चाहिए मुझे, ये डिस्टेंस चाहिए. हाउ टू फाइंड? 13.33. माइनस करने का, राइट? बिकॉज 30 माइनस ए वाला 16 पॉइंट डिवाइड करते हैं, सेपरेट करते विल गेट दिस वन. सो इट इज 13.33 सेंटीमीटर्स. आया? अनुशुड़ा? एंड इसका मैग्निफिकेशन को क्या बोलते हैं? व्हाट मैग्निफिकेशन वी कैन कॉल? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन. लिखो, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन. सो उसका लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या है? लेंथ ऑफ द इमेज बाय लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट को वी कॉल एज लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन. समझ में आ रहा है?